नेक्स्ट वन, लेट्स से कि व्हाट इफ you are given the depreciation का percentage, like the value is reducing but at a certain percent, like for example 10%. So if I am buying an asset, say the cost of an asset is 1 lakh, and after a year the value decreases, so I'll be charging depreciation at the rate 10%, and this 10% will be charged on 1 lakh. So how would that calculation be? Are very good. 10% is 10 upon 100. 0, 0, 0, 0. So answer is 10,000. I'm getting the answer is 90,000. And you know this 90,000 will be called as WDV. Now the full form of WDV is written down value. Means from this asset the value has been written off. Written off means subtracted. So this is called as WDV. Pakka? After 1 year. Acha, again you are charging depreciation. So again depreciation will be calculated at the rate 10% on 1 lakh only. So again the answer would be 10,000. Yeah. 80,000. Again this will be called as WDV after 2 years. The very first one 90 was depreciation calculate करने के बाद में WDV after first year, WDV after second year, WDV as on this date. ऐसा करते 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 one day the value of the asset will be definitely zero. And this is a method whereby you are charging depreciation every year on this cost. So this method का नाम पता है क्या है सर आपको? This method का नाम यहाँ पे हम लोग नामकरण कर रहे हैं. It is original cost method. What is the name of this method? Original cost method. Because you're charging depreciation every year on what amount? Original cost. आपने चेंज किया ही नहीं है. Yes or no? चलो ना थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं. तुम नीचे आ जाओ. जी भी नीचे आ रहा है. जी तुम लग पाओ. चलो नालायक इधर. अच्छा, now this method has one more name. It is fixed installment method. Now can I say the amount of depreciation is exactly the same? Every year it is going to be 10,000 only. 10, 10 and आगे भी 10, 10, 10 आएगा. तो the amount of depreciation is fixed. Or I would say the amount of reduction is fixed as the installments in a loan is fixed. लोन का इंस्टॉलमेंट फिक्स होता है ना, EMI फिक्स होता है, वैसे यहाँ पे भी है. So they are saying this is a fixed installment method. नहीं समझो? Installments in a loan is fixed ना, कि 10, 10, 10, 10. वैसे यहाँ पे रिडक्शन का 10, 10, 10, 10 तो इंस्टॉलमेंट मेथड है. अच्छा, इसका एक और नाम है, लास्ट नाम. अच्छा, इफ हाँ 3 ही नाम है. मैं भी आई वाज आल्सो लाइक क्यों भाई तीन नाम एक रखो ना. नाउ इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, लेट्स से दिस इज माय डेप्रिसिएशन का एक्सेस एंड ये मेरा ईयर्स का एक्सेस. सो द 1 2 3 4 ऐसा करते करते दिस इज 10,000. ठीक है. सो इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 10,000. इन द सेकेंड ईयर ऑल्सो डेप्रिसिएशन विल बी 10,000. This is first year, this is second year. In the third year also depreciation will be how much? 10,000. So can I say this is forming a straight line? That's why straight line method. Simple. अभी क्या और कैसे समझाऊँ मैं? So the name is straight line method because of this reason. चल रहे. Straight line method. Do you understand this? So तीनों दिन बोला था कि क्या करने का? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%, 12%, 15% जो भी बोला लगा देने का. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल. सो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड. पक्का? चलो ज़बरदस्त.